Hello friends, in continuation of the previous lecture, that are the numerical based on the velocity and mechanism using ICR method. So coming to the next numerical, you can see here, in a slider crank mechanism as shown in figure 2, locate all the instantaneous center of the slider mechanism. The length of crank AB and connecting rod are 100 mm and 400 mm respectively. If the crank rotates clockwise with an angular velocity of 10 radian per second, find velocity of slider, angular velocity of connecting rod AB. Okay, so you can see here the given dimensions are, this is the fixed point and this one is the crank. The length of crank is OB is equal to 100 mm and this AB is equal to connecting rod, which is equal to 400 mm. Okay, and the angle between this one is equal to 45 degree. Okay, so redraw this diagram with the help of accurate scaling. Okay, so this is the fixed point and first of all draw this horizontal line. Okay, this horizontal line, select a point at anywhere, and from that point you can draw a line at 45 degree as per given angle. Okay, and I have chosen here the scale is equal to just double of that, means this 100 mm comes down here 1 centimeter, so I have taken here this is to be in 2 centimeter, just a double of that. Okay, and from this point you can draw or mark an arc at an 8 centimeter. Okay, 8 centimeter, because this is 400 mm 4 centimeter, double of that is 8 centimeter. Okay, so likewise you can complete this first diagram. So look at this one is the I12 instantaneous center 1 2, I23, this is the I1 and 2, link 2 and link 3, and I3 and 4, this one is the slider. Okay, means piston, this is slides inside the cylinder. Okay, so how many number of ICRs are there? So you can calculate first. N is equal to n into n minus 1 divided by 2. Here total number of links are, this is the fixed link 1, crank second, third connecting rod, and fourth one is the slider. Okay, this slides into that cylinder. So here 4 links are there, so 4 into 4 minus 1 divided by 2 is equal to 6. So total we have 6 ICRs here. So I center 1 2 on the link 1, 2 4 link 2, 3 4 link 3, 4 dash, and on the link 1 also 1 3 and 1 4. Okay, so 1 2 3 4 5 and 6, total we have 6 eye centers, so which can be identified with the help of Arnold-Kennedy theorem. You can see here, draw a circle, okay, of any dimension, likewise here, and then as we have 4 link, so divide the circle into 4 equal parts, likewise this one. Okay, and then join these points or mark first 1 2 3 4, these are the fixed and permanent eye centers, and join these eye centers 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. So these are the permanent and fixed eye center. Now what about the neither permanent nor fixed eye centers? So you can see here, if I will join line point 1 and 3, so it will create the two triangles, 1 2 3, the first triangle, 1 4 and 3 is the second triangle. अभी इसमें ऐसा करने का है अपने को कि एक लाइन से दो इक्वल ट्रायंगल्स होने चाहिए, दो ट्रायंगल्स बनने चाहिए, और दोनों ट्रायंगल्स का एक ही लाइन कॉमन लाइन होना चाहिए. ओके, सो ऐसा तभी होता है जब ये अपन एक जो लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे दो पॉइंट ज्वाइन करना होता है जिससे कि
दो ट्रायंगल्स बने और जिसका एक कॉमन लाइन हो. सो हियर वी कैन सी दिस वन इज़ द कॉमन लाइन फॉर दिस टू ट्रायंगल्स 1 2 3 1 4 3. सो अभी इसमें क्या करने का है, जो अपने को पॉइंट्स मिले हैं 1 3 उन पॉइंट को ज्वाइन करना होता है. ओके, सो दिस इज़ द 1 एंड दिस वन इज़ द 3. सो कैन ज्वाइन और ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. इसका वेलोसिटी कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ओके, और इसका परपेंडिकुलर ये आएगा. सो वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन्स टू समवेयर एल्स. ओके, एंड इसका स्लाइडर है, सो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्टली आएगा. सो वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस वन somewhere else. So both the points or both the lines are joined at a point that is the point or center of point of I13. ठीक है, ये I13 मिल गया. एंड देन व्हाट अबाउट द I24, लास्ट वन I24. ओके, ये कैसे मिलेगा. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस वन अगेन. इस तरह से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे. ओके, जो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा दैट इज़ नथिंग बट दी I24. ओके, सो नाउ टू फाइंड द velocity of slider and angular velocity of connecting rod, first we have to find out the velocity of link B. Okay, so angular velocity of OB, omega OB is equal to 2 pi n divided by 60. Oh sorry, here the value is directly given 10 radian per second. Okay, and velocity of B is equal to omega OB multiplied by length of OB, 10 multiplied by 0.1 because ये 100 mm है. So which comes to the 1 meter per second. Okay, so now from the measurement the I13A is equal to 9 centimeter. You can see here I13 till to the A which equals to 9 centimeter. ये अपन ने जो डबल लिए थे इसका स्केल, so इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे. ओके, सो हाउ मच इज दिस, 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मीन्स 0.46 मीटर. ओके, लाइकवाइज I13B आप इसको देखोगे तो I13B इज इक्वल टू 106 10.6 राइट, 10.6 सेंटीमीटर दिखा है यहाँ पे. सो दैट इज़ इक्वल टू डिवाइड बाई 2 करेंगे उसको. सो 5.3 दैट इज़ इक्वल टू 0.53 मीटर. सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर A दैट इज़ VA इज इक्वल टू, अपने ये इक्वेशन है, VA डिवाइड बाय I13A, VB डिवाइड बाय I13B. सो VA वेलोसिटी ऑफ एट A इज इक्वल टू VB मल्टीप्लाई बाय I13A डिवाइड बाय I13B. सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज़, VB इज इक्वल टू 1 जो अपन ने कैलकुलेट की है पहले, एंड देन I13A डिवाइड बाय I13B इज इक्वल टू 0.46 डिवाइड बाय 0.53 इज इक्वल टू 0.88 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द फर्स्ट आंसर. ओके, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड AB इज इक्वल टू ओमेगा AB इज इक्वल टू व्हाट. सो VA डिवाइड बाय I13A, VB डिवाइड बाय I13B इज इक्वल टू ओमेगा AB. सो ओमेगा AB इज इक्वल टू VB divided by I13B. Okay, so which is equal to 1 divided by 0.53 is equal to 1.88 radian per second. This is the second answer. Thank you.